हाँ बोलो इधर आओ, bring your book. अरे इधर लाओ my friend, वॉल्यूम लेके आइए. कुछ नहीं किया आपने, क्या किया? रिव्यू क्वेश्चंस इधर ही आगे. तो इधर सेकंड में जो you have done that. I showed you the video that the method of separation का किया था, दिखाया था ना. Distillation. अवनीश एब्सेंट था. एक बार हम लोग फिर से वीडियो देखते हैं, राइट ना? ये आप लोगों को नहीं देखना है वीडियो, चलेगा? कौन सा वीडियो देखना है? कौन सा मेथड्स ना? So when I came to US, I was very new to English as well as some American English. I used to write words like COLOU. How do we separate cream from milk? How about salt from seawater? Well, many of the substances we use every day are actually mixtures, which are made of two or कैसे जाएगा? ना? How about salt from seawater? Well, many of the substances we use every day are actually mixtures, which are made of two or more different substances. In this video, we will explore 10 common methods of separation in chemistry. Number 10, separating funnel. Separating funnel is used to separate two immiscible liquids with different densities. Immiscible liquids are those which won't stay mixed to give a single phase. Oil and water can be easily separated using this technique. Oil floats on top of water, separating into two layers. Water layer then can be drained into a container by opening a stopcock. Number 9, filtration. Filtration is a method for separating an insoluble solid from a liquid. Take, for example, the mixture of sand and water. When a mixture of sand and water is filtered, the sand stays behind in the filter paper and it becomes the residue. The water passes through the filter paper and it becomes a filtrant. Various filtering agents can be used, like filtering paper or other materials. One of the very important filtering material these days is a mask. By wearing a proper mask, coronaviruses will be filtered and stay outside of the mask. Only the clean air goes through the mask. If you want to find out more about filtration process, you can watch my previous video called Filtration. Please click the link above. Number 8, sedimentation. Sedimentation is the process of separating the insoluble solid from the liquid. Now, heavier particles present in liquid normally settle down at the bottom of the container. The process, however, takes some amount of time. Number 7, distillation. When mixtures consist of two or more pure liquids, distillation method can be used. In distillation procedure, the round bottom flask contains the liquid mixture, which must be heated to a vigorous boil.
the component with the lower boiling point will change into a vapor. The vapor moves through a condenser. The vapor condenses and is collected in a liquid state. The other liquid component remains in the round bottom flask. If you want to find out more about distillation, you can also watch my previous video called Distillation. Please click the link above. Number 6, evaporation. Evaporation is a separation method that involves evaporating the solvents in the mixture. In this method, the solution is heated until the organic solvent evaporates, where it turns into gas and mostly leaves behind the solid residue. Once the liquid is completely evaporated, the solid is all that is left behind. An example of this is a salt and water mixture where the water can be evaporated in order to leave the salt behind. Did you know that most of the salt that we use come from South Africa? Well, South Africa gets its salt from inland salt pans, coastal salt pans, and seawater by using the evaporation process. A salt pan is a shallow dam in the ground where salt water evaporates to leave a layer of dry salt. Number 5, sieving. Sieving is used to separate mixtures that contain substances, mostly of different sizes. The mixture is passed through the pores of the sieve. The smaller substances pass through easily, while the bigger components of the mixture are retained. Number 4, magnetic separation. When one substance in the mixture has some magnetic properties, then this method can be quite useful. Strong magnets are commonly used to separate magnetic elements. Well, how does magnetic separation work? For example, mineral ore that contains 2 compounds, one magnetic and the other non-magnetic, can be separated using this method. Yes. The ore grains are fed onto a revolving belt. ये मालूम है ना? The roller at the यहाँ पे क्या होता है? They are thrown outward. ठीक है? And यहाँ पे what they get stuck up to this magnetic roller, and they actually, because they are magnetic and they fall near the magnetic roller, and the other one thrown out. जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर तुम ये magnetic roller देखो, this is non-magnetic and this is magnetic. Okay, and this is the belt. This is the hopper from where we actually what pass the ore. Like tin ore. Tin ore is non-magnetic. Iron is magnetic. ये जो magnetic substance या non-magnetic जो भी material mixture जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? Anything which is non-magnetic is thrown outward. Look at this. Outward. और जो magnetic है, चिपक के इधर आ जाए. And it gets stuck up over here. And finally, here the magnetic field gets, I mean, that magnetic property gets over. So यहाँ पे, here you will get 2 heat. This is magnetic. This is non-magnetic. ठीक है? बहुत दूर-दूर फेंक जाते हैं. इसलिए दो अलग-अलग खीप दिखाई देंगी. जो away from that ruler है, it is nothing but non-magnetic. यहाँ पे आपको मालूम नहीं पड़ रहा है. यहाँ पे of course there is a kind of, for example, एक barrier है where we come. Okay? तो ये important चीज तुमको ध्यान से रखना. ठीक है ना? The end of the belt is magnetic. This means that all the magnetic grains in the ore will stick to the belt when it goes round the roller, while the non-magnetic grains will fall off the end. As soon as the magnetic grains move past the magnetic roller, they will also fall down. Number 3, crystallization. Crystallization is an evaporating technique that works to form crystals of the solid. Number 2, chromatography. Chromatography is a method for separating colored substances or mixtures of gases in the case of gas chromatography. The name chromatography comes from the Greek word chroma, meaning color. Chroma means color. Graphy means light. The 2 elements of chromatography are the stationary phase and the mobile phase. The mixture is placed on the stationary phase.
The mobile Thin strip phase, of paper a mixture of solvents or diluents thin strip of paper over the mixture and नहीं है ना? continues to pass through the stationary phase, कहाँ है carrying paper? along the components of the mixture. Last page book का निकल Why are the different pigments Not volume. acting at different speeds? Well, pigments migrate at different speeds क्या हो? because of differences in their properties. Large नहीं नहीं pigment अगर particles फटा हुआ है tend तो to वो move slowly. Furthermore, particles that dissolve Ah. while in the liquid will tend to stay in the liquid and be carried to the top quickly, while particles that bind well to the paper will tend to move slowly. Paper chromatography is often used when the dissolved substances are colored, such as inks, food colorings, and plant dyes. A pure substance will only produce one spot on the chromatogram using paper chromatography. Two substances will be the same. एक मिनट just पता now look at this इसको बोलते हैं paper chromatography. Now we don't use this paper, we use that newspaper का जो पेपर आता है ना porous, यानी जैसे पानी में भीग गया पेपर तो कैसा सब सोख लेता है पानी, that is called porous paper. porous paper लिया तुमने, एक strip लिया, नहीं सस्ता नहीं है, porous रहता है, ऐसा strip बना लिया तुमने, ठीक है? और ये strip को क्या करना है, just 2 centimeter above this particular from the bottom 2 centimeter, okay, ऊपर 2 centimeter या थोड़ा सा ऊपर you will make a pencil का line, pencil से line बनाना है. pencil है आपके पास? Yes sir. pencil नहीं है किसी को? हाँ ठीक है, ये आपने पेंसिल से लाइन बना ली and then ये ड्रॉप ऑफ इंक आप इसके ऊपर लगा दीजिए, यहाँ ये लाइन के ऊपर. अभी मैं इसको जस्ट ऐसा प्रेस करके जस्ट लिख दूं और इसको ये थिन यहाँ पे बीकर में डाल दो, ओके, एंड इसको सस्पेंड कर दो. सस्पेंड यानी यहाँ पे हैंग कर दो, ठीक है? इस हैंगर में कपड़ा कैसे हैंग होता है वैसे यहाँ पे आप एक एक्चुअली और यहाँ पे बैरियर रहेगा यानी एक सपोर्ट रहेगा, वहां से एक हुक रहेगा, दैट हुक में ऐसे डाल देंगे, ओके, दिस पेपर एंड वी जस्ट पुट इट एंड हियर एट द बॉटम वी आर हैविंग वाटर. नाउ ये जो पेपर है इसको टच करके इट विल बी टचिंग दैट पर्टिकुलर वाटर. What actually happens? The water soaks that, this particular paper soaks that water. The water moves up. And when water moves up, what actually happens? This ink starts moving. Ink means what? Now this black color consists of many different substances. तो आपको अलग-अलग कलर दिखेंगे. ये देखो ये ऐसे पुल करता रहेगा, पानी ऊपर तक खींचता जाएगा वो. क्योंकि ये पोरस है. ठीक है, सोक करता जाएगा and then what will it do? It will try to remove these particles, you know, it will carry the particles along with it. ठीक है, and finally when you are having, If they produce the same color on the spot, ये 4 color indicates in 4 components. So इसमें आपको 4 dots दिखाई देंगे, okay, at different position पे, okay. For example here you will get ये जो black dot है, it will give you for example red color at certain point, then it will give you what, green color suppose, ठीक है, और it will give you what, blue color नहीं है. Anyway ये देखो आपको अलग-अलग कलर दिखेंगे. So different colors are different, you know, points indicating different materials. फिर इसको क्या करना है, संभाल के you take out the strip of paper, cut it. इसको कट कर देंगे, इसको strip of paper को कट कर देंगे. ये देखो अब ये strip में ये component A है, उसको dissolve कर देने का पानी में. ये component है ना, paper तो dissolve नहीं होगा, ये component उसको dissolve हो जाएगा. फिर वो solvent को evaporate कर देने का and you will get chlorophyll A, suppose chlorophyll A, okay. फिर ये strip का कट करके ये strip को दूसरे solvent में डाल देंगे, ये जो color है वो dissolve हो जाएगा उसमें, because that solvent has got a property to dissolve this material. And then you evaporate that solvent. Again, you will get, for example, 2 different substances, 2 beaker. And you will say, sir, this is chlorophyll A, this is chlorophyll A, this is chlorophyll B. And you can study the composition. Chromatography. Separation of different substances on the basis of what affinity towards the solvent. जिसका affinity solvent से ज़्यादा रहेगा, वो ज़्यादा ऊपर move करेगा. वो carry करते जाएगा ऊपर. और जिसका affinity और solvent से कम है, पहले रुक जाएगा बीच में. तो ऐसा करके a difference in the affinity. Here, and their spots travel the same distance. up same the paper. compounds, but different. Number 1, centrifuge. Yes. In some cases, where the Yeah. solid particles are too fine, But ये वाला आपको पता है ना, ये क्या है, spin tub है, right ना?
इसमें अपना एक रोटेटर रहता है, and therefore what it will do, and small यहाँ पे, if you remember, small holes are there, yes or no, in spin tub or washing tub, and यहाँ पे आपका एक टी-शर्ट है, वॉशिंग मशीन में टी-शर्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपका पैंट धुल रहा है, ठीक है, टी-शर्ट, वो जो भी है, ठीक है, अब ये अपना घूम रहा है, यानी पानी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट, I mean the dirt and the soaps and other things are there, okay, starts rotating, look at that, okay, ये rotate कर रहा है इसे with a very high speed, spinning with a very high speed is called centrifugation, and then what happens, this particular water is thrown outward, ठीक है, with the dirt, ये देखो small holes से बाहर निकले, हाँ बाद में उलझ से, और उसके बाद ये जो क्लोथ्स है एंटेंगल फॉर्म में आपके पास मिलेंगे नीचे, that means the heavier material they settle at the bottom and the lighter particles they go out along with the dirt, and the clothes also 70% become dry, they don't become dry fully, they become dry only 70%, तो 30% आपको क्या करना पड़ेगा, sun का presence में आपको उसको dry करना, that is the idea, centrifugation. Spinning. To be separated with a filter, a centrifuge can be used. Centrifuges are mechanical devices that spin at very high speeds. These high speeds allow the solid particles in suspension to settle very quickly. For example, rather than waiting for blood samples to slowly settle, a centrifuge can be used to separate blood into plasma and red blood cells in a matter of seconds. RBC. Other examples of how centrifuges are used include separating cream from milk and separating uranium isotopes for nuclear power plants. Well, that's it for today. Thank you for watching. ये वाला देखा कि नहीं, वो अवे हवाई बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन हवाई, फिर एकदम कम हो गया ना, नहीं है, हाँ अभी ठीक है, नहीं नॉन साउंड है, देखा क्लास है, इसका नहीं देखा, इसका भी देखा।
एक बॉल चाहिए था उसको, हजारों बॉल्स
स्पॉट मिला था सी साइड से go on adding till no more salt get dissolved. That is called saturated solution. Of this solution. Vacation, yes. Vacation for 2 days. Crystallization. Bigger crystals. सर केला कैसे वो एक ही साथ प्लेस में रहता है वो ये है क्या बोलते हैं सॉल्ट मिल गया चलो टेक योर रिवॉर्ड हो गया नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस नाउ वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चंस ओके क्वेश्चंस पे जाएंगे ठीक है चलो चिल्ड्रन देखिए स्टार्ट जो ये पढ़िए वर्कशीट का क्वेश्चन पढ़ना है पहले ओके वर्कशीट करना है ना तुम लोगों ने वर्कशीट नहीं किया ना किसी ने भी ओनली वन स्टूडेंट हैज डन ऑल अदर्स हैव नॉट डन तो हम लोग क्या करेंगे फॉर एग्जांपल दिस साइड इज अ विंडो टीम दिस साइड डोर टीम एक एक आंसर देते जाएंगे ठीक है चलो आज जिसने किया वो कर देगा दे देगा लेकिन अगर वो रॉन्ग हो गया माइनस चलेगा So let us start doing first question. You want to take minutes. You want to plan for 10 minutes. I'll 5 to 10 minutes I can give you. Have you planned those questions? नहीं किया ना चलो plan करो. For example. अरे good break. Not working. हाँ यस बहुत ही अच्छा बोला कितने क्वेश्चन है उसमें 50 हाँ एमसीक्यूज तो कर दिया ना उन्होंने
चलो स्टार्ट करो. You will do second, fourth, sixth, and eighth and 10th. Second. अच्छा है ना, बोनस मिल रहा है. अगर इन लोगों को नहीं आया पहला क्वेश्चन, आप दे सकते हैं. अगर वो रॉन्ग हो गया तो माइनस है, राइट? Choose the chemical change out of the following. यानी उसमें कौन सा chemical change है, कौन सा physical change. Now chemical change and physical change आपको मालूम है ना? Last time we discussed what is the physical change. No change in composition.
Yeah, all over done. हाँ? इधर है ना ये एक्सपेरिमेंट में है ना ये द एक्टिविटीज उसमें भी आंसर्स है एक्टिविटीज में भी आंसर No, okay.
Chalo, now let us start working on this. Okay. Chalo, first question to the window team. चलो बोले जो ये पहला क्वेश्चन क्या है? Yeah, what is meant by soluble? Any noise -10. जरा भी कोई बात करेगा -10. चलो बोलो. The amount of solute present in a saturated solution at a given temperature is known as. Yes, the amount of solute required to saturate 100 grams of solvent is called as solubility. 10 points. Any other question is there in that? एक ही question है. चलो next one. Ariman बोलिए. What happens when a hot saturated solution of all the solid is poured outside Crystallization. Good. Next one. Third. Choose the chemical change out of the following. Ah, First, digestion of food. Second, digestion of food is chemical change. Why? Because there is a new substance being formed. Then second. Second, freezing of water. Freezing of water is not a chemical. Not a chemical change. Good. Then Glowing of an electric lamp is not a chemical change. Then mixing of iron filling with sulfur. pardon? Mixing of iron fillings with sulfur. Iron filling with sulfur. Huh? Then it is not a what is a chemical change. So एक ही है chemical. Digestion. Good. 10 points. Fourth. I think their answer. Give an example of two miscible liquids where distillation can be used for separating एक मिनट. acetone plus water and alcohol plus water. हाँ क्या फिर से question. Give an example of two miscible liquids where distillation can be used for separating them. Acetone plus water and alcohol plus. Yes, absolutely right. 10 points. और कोई point है उसमें और कोई question है? नहीं. चलो fifth question. कौन बोल रहा है? श्रद्धा. श्रद्धा is telling. आप अदिति बोल रहे हैं. हाँ बोलिए. Complete the following table based on separation technique. Acetone plus water separated into Distillation. Very good. Then boiling points. Absolutely right. Second is हाँ. second is chalk water. Chalk powder and Water. water. किससे separating funnel? Wrong answer. क्या आंसर हो सकता है? Filtration technique. Filtration, sedimentation से better है filtration. आपको filter करना. 10 points इन लोगों को मिल गए. Yeah. Okay. चलो no problem. 30. चलो आप next question पे आ जाओ. Fifth बच्चा है बोलिए. Mixture techniques of power separation technique. Chromatography. Principle separates solute from same solute. Same solvent by on the basis of different ability to get what? Here a chromatography. What is the property? On the basis of what? Chromatography देखो check करो chromatography. वहाँ भी इन लोगों ने दिया है. ये आंसर दिया चलेगा नो प्रॉब्लम. ये नहीं chromatography on the basis चलेगा no problem. On the basis of affinity towards the we can say the solvent, we can say. Okay, difference in the affinity. Next one, sixth question बोलिए. 3 क्वेश्चन था ना उसमें. एक क्वेश्चन रॉन्ग मिला तो आपको 10. ठीक है ना. So next one,
कौन बोल रहा है? राजदीप ऑलरेडी आंसर दे दिया आपने, अब दूसरा कोई आंसर नहीं। पार्थ बोलिए। What is chromatography? State its principle, right? Well, advantage of chromatography over techniques. Chromatography is used for separation of subgroups that dissolve into the same solvent. Yes. Right. Dissolve the same solvent but having different colors. Right now. So then, second point. What is the one advantage? Huh? Can separate colors. Okay, that means yes. Okay, no problem. And we can use the same solvent. Okay, that means there is no need to. So here 10 plus 10. Next one. Okay, some next one. Fully. Seventh question. कौन बोल रहा है? हाँ, बोलिए श्रद्धा जी. बोलिए. Some solids decompose or some like sugar rigid charge and chemical dryness. Some एक मिनट. -10 हो जाएगा. चलो फिर से. हाँ, फिर से बोलिए. No need to discuss when they are giving the answer. चलो फिर से पढ़िए. Yes, absolutely right. 10 points. Next one, 8. और एक क्वेश्चन है, बोलिए. Yes, repeatedly, and therefore that is the what is the efficient way to separate one liquid from the other. Okay, which is having, for example, bolo. Centrifuge. 3 है. Now jackpot question for them. अगर इसका आंसर तुमको मिल गया 30 पॉइंट मिलेगा ये आंसर, क्योंकि तुम लोग का एक 3 क्वेश्चन है, इन लोग का एक क्वेश्चन है ना. चलो 30 मार्क्स का क्वेश्चन ये 3 है ना, इसको 90 मार्क्स मिल सकता है अगर सब राइट है, नहीं तो -30 हो जाएगा. अगर आंसर राइट हुआ तो +30, अगर आंसर रॉन्ग हुआ -30 हो जाएगा. सोचो ना, बड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड. चलो नेक्स्ट वन. रिस्क एंड रिवॉर्ड इक्वल है 1:1. अगर 30 मार्क्स तुम्हारा, अगर आंसर, चलो ये आंसर रॉन्ग हो गया. आंसर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर तुम लोग का आंसर रॉन्ग होगा, इन लोग ने आंसर दिया 60 मार्क्स इन लोग को मिले. डबल 30 का डबल नहीं चाहिए. बोलो ध्यान से बोलो. चलो है ना. टाइम लगाएगा तो 20 मार्क्स हो जाएगा. हाँ मैग्नेटिक सेपरेशन. From the mixture of camphor and sodium chloride. Sublimation. वही क्वेश्चन चल रहा है ना. नहीं, वही क्वेश्चन चल रहा है ना. Different component of milk. नहीं, क्रोमैटोग्राफी. 30 हो गया. एक ही क्वेश्चन है ना वो तो एक ही क्वेश्चन आएगा. 30 पॉइंट, लेकिन 3 क्वेश्चन था तो तुम्हारे को वही क्वेश्चन उसमें था ना, टाइटल एक ही था. चलो नेक्स्ट वन. 30 पॉइंट जैकपॉट. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. 9th क्वेश्चन. यस.
तुम लोग को 3 क्वेश्चन मिल रहा है 10 + 10 तुम लोग का देखो ये 3 इतने इधर ये देखो ये क्वेश्चन इक्वेट किया ये देखो ये तुम लोग का 3 इधर एक ही है तो कैसे होएगा बैलेंस नहीं हो रहा ना इसीलिए चलो नेक्स्ट वन क्या बोला आपने नया व्हाट यू सेड यस स्मोक एंड fog are different what is the dispersed space of smoke smoke is nothing but what solid in air yes or no और fog में क्या है liquid in air ये आपको बोलना है ठीक है चलो 10 पॉइंट 10 अभी लेट अस सी अगर उन लोग ने सब आंसर दिया नहीं तो आपको डबल मिलेगा ना सी सर देंगे ना ऑफ कोर्स लेट अस सी देखो कभी-कभी आंसर इट्स रॉन्ग वहां पे रॉन्ग कौन बोल रहे हैं आर्यमन बोलिए एक आंसर रॉन्ग -30 और अगर देखो आंसर राइट हुआ 30 +30 रॉन्ग हुआ तो -30 और इन लोग को यहाँ पे डबल मिलेगा विदाउट गिविंग द आंसर चलो बोलो चलो A mixture of chloroform and water taken in a separating funnel is mixed and left undisturbed for some time. The upper layer in the separating funnel will be of dash and the lower layer will be that of dash. First chloroform, second water. क्या लग रहा है फर्स्ट क्लोरोफॉर्म इज ऊपर वाला क्लोरोफॉर्म है और नीचे वाला वाटर रॉन्ग आंसर सेकंड आंसर भी आ रहा है आप बोलिए Absolutely right. So, next one. 30 points. This is due to the scattering of light by milk and the phenomenon is called Tyndall effect. This indicates that milk is a colloidal solution. Absolutely. यहाँ पे 60 आपको मिला रहेगा सुनो इधर मैंने बोला ना इन लोग को 60 विदाउट गिविंग द आंसर समझ में आया अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया ठीक है बस 0 हो गया ना प्लस अरे ये माइनस 30 रहा ये प्लस 30 ओके अरे वही -30 सुनो ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे माइनस इन्होंने आंसर नहीं दिया इसका आंसर देना फॉर एग्जाम्पल 16 तो 30 विल बी 30 ठीक है 70 90 100 1 month यहाँ पे 60 ये कैंसिल हुआ स्ट्रेट ओके 80 80 120 दिस इज 1 ये भी 110 देखो कैलकुलेट सुनो तुम लोग मैथमेटिक्स पढ़ लो कि नहीं -30 क्या हो So that's all. So everybody, round of applause to each team. We can say, ठीक है? नहीं चले ना अभी टाइम हो गया. Next lecture में third topic हम start करेंगे. Which one is that?
Atoms and molecules. Next time we start with a fresh point. बोलो हाँ बैलेंस करने ज्यादा जैकपॉट हाँ चलो हो गया टाइम टाइम इज अप नहीं both are equal winners